नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावर भी देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज सावन तांच्या गृहराज्य ओडिशाच्या 6 दिसांच्या दौऱ्याचेर वतली. आज सांजे भुवनेश्वरांत ती खोर्धा, जाजपूर, बालासोर, पुरी आनी मयूरभंज जिल्ल्यांतल्या अधिकृत शैक्षणिक आनी सांस्कृतीक कार्यक्रमांच्या मालिकेत वांटो घेतात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मुखावेल्या कांय दिसांत ओडिशांत धार्मीक, शैक्षणिक आनी विकासात्मक कार्यक्रम आंखतली. फाल्यां राष्ट्रपती जाजपुरांत माँ बिराजा मंदिरांत प्रार्थना करतली आनी नवी गोंयांत धार्मीक विधी करतली. उपरांत बालासोरांत फकीर मोहन विद्यापीठाच्या 12व्या दिक्षांत समारंभाक मुखेल सोयरी म्हूण उपस्थित रावतली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी 2026-27 चो केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केलो, जातून उत्पादन, मुळाव्यो सुविधा आनी रोजगार निर्मितीक नेटान चालना दिल्या, तर कर आनी सीमा शुल्क व्यवस्था सोपी करपाचो प्रस्ताव मांडला. केंद्रीय अर्थसंकल्प हो मानव केंद्रीत आसा आनी पथदर्शी सुदारणा सयत भारताची बुन्याद घटमूट करता, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. हे ऐतिहासीक आनी देशाच्या सुदारणा मार्गाक गती दिवपाक आनी दीर्घकालीन विकासा खातीर उत्प्रेरक म्हणून वर्णन तांणी केलां. ऐतिहासिक है, इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है. ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है. ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है. ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है. अर्थसंकल्प सादरीकरणा उपरांतच्या उलोवपांत मोदी हांणी म्हणलें की हे प्रस्ताव अर्थवेवस्थेक उर्जा दितले, नागरिकांक सक्षम करतले आनी भारतांतल्या तरणाट्यांक नवीन उंचाय गाठपाक नवीन संदी दितले. सरकाराच्या सुदारणा अजेंडाक सुदारणा एक्सप्रेस अशें म्हणून तांणी सांगलें की आज भारत ज्या सुदारणा एक्सप्रेसार स्वार आसा ताका ह्या अर्थसंकल्पांतल्यान नवीन उर्जा आनी नवीन गती मेळटली. हातांत घेतिल्ल्या पथदर्शी सुदारणांक लागून म्हत्वाकांक्षी भारताच्या धाडसी, प्रतिभावान तरणाट्यांक मेकळें आकाश मेळटलें. संसदेच्या दोनूय सभाघरांत आज राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणाचेर आभार प्रस्ताव मांडलो. केंद्रीय मंत्री आनी भाजप खासदार सर्बानंद सोनोवाल हांणी लोकसभेत हो प्रस्ताव मांडलो आनी तांच्या पक्षाचे खासदार तेजस्वी सूर्या हांणी ह्या प्रस्तावाक अनुमोदन दिलें. हे विशीं आभार व्यक्त करतना सोनोवाल हांणी म्हणलें की Speaker, sir, the address of the Honourable President of India to the joint session of Parliament has been a remarkable one. It is the first in the new quarter of the 21st century, setting the stage for the next 25 years of our nation journey. A crucial quarter centuries when an aspirational nation surges ahead towards development, a Viksit Bharat. राज्यसभेत भाजप खासदार सी सदानंद मास्टर हांणी प्रस्ताव मांडलो आनी तांच्या पक्षाची खासदार मेधा विश्राम कुलकर्णी हांणी ह्या प्रस्तावाक अनुमोदन दिलें. राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणावेल्या आभार प्रस्तावाच्या चर्चे खातीर लोकसभेत एकूण 18 वरांचो वेळ दिला, अशें संसदे भायर पत्रकारां कडेन उलयतना संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी सांगलें. आनी ही चर्चा 3 दिसांत जातली आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवारा लोकसभेत चर्चेक जाप दितले, तर राज्यसभेत ह्या विशयार चर्चे खातीर एकूण 16 वरांचो वेळ दिला, अशें रिजिजू हांणी म्हणलें. बजेटा विशीं उलयतना तांणी म्हळें की बजट तो विपक्ष तो बजट का अच्छा को देखने के लिए वो मंजूरी नहीं है, तो उसको तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ. पूरा दुनिया देख रहा है देश का बजट के बारे में कि आज भारत का बजट सिर्फ छोटा बजट सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं, आज विश्व के लोग भी भारत के बजट को देखते हैं. अगर यूपीए सरकार का समय 2014 आखिरी जो बजट है उसमें से जितना बजट पेश किया, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लो 2 लाख करोड़, आज यहाँ 12.5 लाख करोड़ का आसपास हो गए. कितना जंप, कितना साइज बदल चुके हैं. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 2 दीस दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंदीगड, उदेंत राजस्थान आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशांत दाट धुके पडटले असो अदमास काडला. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण फाल्यां मेरेन उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगीट बाल्तिस्तान आनी मुझफ्फराबाद हांगा वीज आनी वादळी वारे वांगडा गडगडपाची शक्यताय आसा. आयसीसी दादल्यांच्या 19 वर्सां पिराये सकयल्या क्रिकेट एका दिसाच्या विश्वकरंड सर्तीत काल झिम्बाब्वेच्या बुलावायो हांगाच्या क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबांत भारतान प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान पंगडाक 58 धांवड्यांनी हारयलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.